ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासुदेव गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे सुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। आप सभी का स्वागत है आज के इस गीता के प्रवचन में। We welcome all हम अध्ययन कर रहे हैं to today's Bhagavad Gita class. चतुर्थ अध्याय का 16वां श्लोक। We are studying chapter 4, verse 16. पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था In the previous verse, Bhagavan said कि पूर्व में जो ऋषि हुए that the rishis who appeared in the past, the mumukshus, the seekers of liberation, भाव से किया they did karma with sense of हम detachment. स्वयं भी इस प्रकार से कर्म करते हैं और फल में अनासक्त भाव से कर्म करने के कारण Due to performing karma without detachment to result, they were never bound by the karma. प्राप्त किया। Rather, they achieved moksha, liberation. अनेक ऐतिहासिक उदाहरण हैं And there are many examples of this उन्होंने in the ancient times. जनक का नाम दिया था। Like he had told about Janak also earlier.
He is coming. तो अभी इस श्लोक में वो बताते हैं कि इसलिए कर्म को So in समझना this आवश्यक verse, he is telling that है कि this is why it is important to understand karma. कवि अप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज् ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है इस विषय में What तो is action and what is inaction? Even the wise are deluded in this regard. I shall now explain to you the truth of action, knowing which you will be freed from bondage to action. तो अगर हम किसी भी कार्य को करते हैं तो उससे पहले So, whenever we do something, it is important to know beforehand that what is the potential profit or loss by doing that activity. कर ही कार्य करते हैं, And generally, we do activities by कार्य नहीं करते हैं analyzing the profits and loss only. And those who do not कर रहे हैं और हमको यही act करना without, नहीं है those who act without thinking, कि इसका they परिणाम क्या होगा suffer. और Those who do not अनुभव नहीं analyze पाते what will be the result of the तो action, हमें कष्ट and होगा, if they face adverse पछतावा होगा। results, then they suffer. तो इसलिए बुद्धिमत्ता इसी में है So, कि हम जो भी कार्य it करें is always wise to वो समझ करके कि analyze इसका क्या beforehand परिणाम होगा। what will be the results of my यहाँ action. भगवान ने दो शब्दों का प्रयोग किया, So, here Bhagavan has used two words, karma and akarma. तो कर्म से उनका मतलब शास्त्र विहित कर्म से है Here, karma means karma that is और ordained in the अकर्म Shastra, and akarma से भिन्न, is what is other than the Shastra ordained शास्त्र विहित karma, नहीं है। what is not ordained by इसलिए Shastra. दोनों को हमें समझना है, So we have to एक को हमें understand करना both, है और एक को नहीं करना because है। the first one is what we जो have to करना do, है and the उसको भी second one जानना is है, what we जो have to नहीं करना है avoid. उसको भी जानना है। What we should do, we should know that, and what we should प्रश्न ये avoid, उठता we है should कि also जो know नहीं that. करना उसको क्यों समझना Now, है, the question may be that what we are not इसलिए supposed to शास्त्र do, में why हमें should we know बताया that? है क्योंकि So, the answer is that it is उसको हमें important to छोड़ना है know what is to be avoided, तो हमें उसको भी जानना होगा because कि क्या छोड़ना we have to reject that, we have to give it up. है। So, आपको if we have to give up something, we should know what we have to give up. डॉक्टर सलाह For देता है example, if the doctor advises you कोई खाद्य विशेष मत that खाइए, you should avoid some particular type of diet or खाइए, food item. Suppose कुछ doctor रोगों के लिए prohibits you आलू मत from खाइए, चावल eating मत खाइए, potato or तो rice. आपको जानना पड़ेगा ना आलू So क्या है, then you should आप know जानेंगे नहीं what you are supposed to avoid. आपके If you पेट do में not दर्द है तो know आप उसको खा लेंगे। and there is potato in your food and you will eat that. खाने के लिए आपको जानना है वो So कहता just है like for eating, you need to know what to eat, what not to eat. भिंडी की सब्जी खाइए या तोरी की And सब्जी suppose खाइए, somebody says आपको that पूछेगा कि भिंडी क्या है तोरी क्या है, you eat some ऐसे particular कैसे food बता item, so सकते you हैं। should know what that food item is. Similarly, इसलिए यहाँ what is to भगवान be बताते हैं कि avoided, क्या you should कर्म know है that और also. अकर्म क्या है, So Bhagavan is telling we should know what is karma and what is तो akarma. अकर्म ना करना Akarma संस्कृत में will कर्म के can जैसे generally mean that we should एक अर्थ होता है not doing karma. विरोधी जिसे विकर्म बोलते हैं, But in और Sanskrit, एक this a सही has अर्थ six होता है थोड़ा meanings, कर्म। meaning different from karma or little karma or not doing karma. क्योंकि आगे श्लोक में वो विकर्म शब्द Now का भी here, प्रयोग because करेंगे, in the upcoming verses, he will speak about vikarma as well कर्म as अकर्म दोनों का ही akarma. उपलक्षण है यहाँ पर। So here, akarma is इसलिए indicative of both. तो प्राय करके कर्म को Because हम there is तो karma also, akarma नहीं also. करते हैं, Generally, karma means कर्म when we do करते हैं some activity, we और say that we अकर्म are का doing मतलब है karma, कोई भी and कर्म नहीं करना, akarma means not तो doing वो any अकर्म कहलाता है। activity. Then generally, that is considered as akarma. ऐसा कोई But आवश्यक नहीं है it कि is not necessary क्रिया करने से ही कर्म that होता है, by doing कर्म action, क्रिया it के will द्वारा always होता be है। called karma, and by not doing या activity, it दूसरी will तरह always से be called akarma. In the upcoming ऐसा भी हो verses, सकता है Bhagavan will कि deliberate on that. कर्म करते हैं लेकिन वो अकर्म के समान है, आप Sometimes कुछ भी it नहीं may करते happen हैं, that you do karma, but it is like akarma, and you इसलिए do क्योंकि not do इसको anything, still समझना it भी is karma. आवश्यक है कि कर्म क्या है और So it अकर्म is क्या very है। important to understand what is तो हम karma केवल इसको and what जानने is से ही akarma. Because if we do not understand हम this, फिर गलत कार्य then करेंगे। we will end up doing इसलिए wrong वो कहते activity. हैं कि तत्ते So Bhagavan is कर्म saying, प्रवक्ष्यामि, इसलिए मैं आपको
कर्म की that विधिद्वया सिखाऊंगा। I shall now explain to you the truth of केवल action. कर्म भी, तत्ते And कर्म karma प्रवक्ष्यामि। means he'll explain what is akarma also. दोनों प्रकार से इसका अर्थ किया जा सकता है कि दोनों ही मैं बताऊंगा कि कर्म क्या है और अकर्म So क्या है। Bhagavan will explain both karma and akarma. बड़े बड़े Why? विद्वान लोग भी Because even इसमें great मोहित हो जाते हैं wise इस विषय people में, also become deluded क्योंकि हम in प्रायः this ये regard. सोचते हैं कि जो Because हम generally we think शरीर और that इंद्रियों से करते हैं whatever we वही do कर्म with है, our body and senses, only that is karma. और अगर हम उनका उपयोग नहीं करते हैं तो वो And if we कर्म do है। not use that, it is लेकिन akarma. ऐसा आवश्यक But नहीं है। it is not necessary. प्रत्येक क्रिया जो है वो Every activity कर्म नहीं हो सकती है, और कुछ भी ना करना भी कर्म is समझा not जाता है। necessarily karma, and by not doing anything also, और it is दूसरा possible to do karma. विषय समझने का है And कि the other कर्म के important पीछे point to be हेतु क्या understood है। is what is your motivation भाव से ही behind doing the karma. उसकी संज्ञा बदल जाती So है। that also changes the meaning of जैसे karma. भगवान 18वें अध्याय में Like in the 18th त्याग की chapter, बात करते when हैं Bhagavan speaks of tyag or कि कोई renunciation, व्यक्ति मोह के so he कारण says that if some person कर्म out नहीं of करता delusion does not और तस्य perform karma, तामस परिकीर्तित नियतस्य तो संन्यास कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागे कर्मणो नोपपद्यते। आपका जो कर्तव्य कर्म है उसको किसी whatever मोह के is कारण आप your नहीं करते हैं, karma that you should do, if you do not do that out of delusion, thinking that I do not ये need to do this, आध्यात्मिक मार्ग में होता है ऐसे। and generally this happens on the spiritual path, अगर आप भक्ति के that मार्ग में आ गए हैं तो फिर suppose किसी you मोह have come to the path of की bhakti, आवश्यकता then नहीं है। some people start saying that now we don't need to do anything, we do not have और any अपने माता पिता के प्रति कोई responsibility, we उत्तरदायित्व do नहीं, not have any responsibility towards our parents or anybody शरीर else, ग्रहण कर लिया। because we have taken shelter of तो इसको Bhagavan. देखना पड़ता है कि वास्तव So में then this all ऐसा has to सोचना be शास्त्र analyzed. सम्मत है या नहीं है। Is thinking like आप this ठीक भी हो सकते हैं और आप गलत acceptable भी हो by सकते हैं। Shastra? It may be correct इसलिए इस also विषय or it में may be कहते wrong हैं कि also. योऽपि अत्र मोहिता के So Bhagavan is जो telling that even the विद्वान लोग हैं great wise people उनको इसमें also भ्रम हो become जाता है। deluded in this regard. इसलिए भगवान आगे कहते हैं कि That's why तस्मात् शास्त्रम Bhagavan will say later, कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कार्य कर्तुम अर्हसि। तो कहते हैं कि इस विषय में he शास्त्र ही says that प्रमाण है in this regard, कि क्या Shastra is the only कर्म praman है क्या that अकर्म है। what is karma and what is akarma and what is vikarma. कभी कर्म भी विकर्म Because बन सकता है और विकर्म sometimes भी even कर्म बन karma can सकता है। become vikarma. तो उसको हमें शास्त्र से समझना होगा। So we have to understand that by Shastra, केवल शास्त्र में लिखा and हुआ है उतना ही नहीं है, उसके पीछे not just what is written in भाव क्या है Shastra, उसको जानना पड़ेगा कि with what भाव के motive साथ you क्या are है। doing that, that motivation also changes तो karma. इसलिए इस बात को That's यहाँ पे why भगवान थोड़ा जोर देकर बोल रहे हैं Bhagavan is emphasizing इसके on this ज्ञान पर ही point आप that we should इसमें work समर्थ होगे। only by इसको after अपना knowing काम what बनाना is नहीं है। karma, what is akarma, and then only we can हम ये become free सोचते from हैं the कि मैं bondage of कुछ कर्म karma. नहीं कर रहा हूँ, लेकिन Because वास्तव we में may think that we are not doing any karma, but that also may be karma and we may become bound by that karma. सात्विक क्रियाएं जो हैं वो अगर राजस भाव से की जाएं If the sattvic actions are done by rajasic mentality, जैसे then they देवताओं की also उपासना turn करते into हैं, rajasic karma. For example, तो if you are शास्त्र में आगे worshipping बोलते हैं devatas, कि जो सात्विक पुरुष है वो देवताओं की उपासना करते हैं, so it is said that the sattvic यक्ष people they रक्षस worship राजसिक devas, राजसिक लोग यक्षरस rajasic राक्षसों people की, they worship the भूतगणांश yakshas, दूसरे the भूतगण की। some people they worship the तो bhutas, देवता the की उपासना bhutaganas. सात्विक मानी गई है, लेकिन So the वही देवता worshipping की devatas उपासना is अगर considered आप sattvic, but that किसी same worship, फल की if उपासना it के is लिए done फल सिद्धि के लिए with करते the हैं motive of getting some result, some तो वो fruit, फिर राजसिक हो जाता then है। that same worship turns into वही rajasic. उपासना अगर आप किसी हिंसा And करने that के लिए करते हैं same worship, if you are doing that तो with the motivation of वही causing violence or उपासना harm to somebody else, then that worship will be वो considered as क्रिया तो एक tamasic. ही है,
So action is same only. फलासक्ति या फल लाभ के लिए क्रिया कर रहा है, उपासना कर रहा है, One who is doing that वो भी activity उसी with की the motive उपासना कर of रहा है। getting result, he is also वो केवल कर्ता है, doing the performing the worship in the same उपासनाकर्ता way है, वो भी उसी as परमात्मा one का who is doing it just as a वो भी duty, उसी की हिंसा करने के or लिए as one उपासना कर रहा है। who तीनों की is क्रियाएं doing it to cause harm to somebody. तीनों की क्रियाएं समान ही दिखती So हैं, externally, it all the three modes of worship will appear same only, but there will be difference in the result they will get. उनसे भाव And the main reason behind that is what is their इसलिए यह motivation for समझना doing this worship. अति आवश्यक है। That is why it is very important to understand this. कर्म क्या है और That अकर्म what is क्या है, karma and what is इसलिए akarma, भगवान ने यहाँ कहा है कि and बड़े why पुराण में Bhagavan is telling here कि कवि लोग भी जो है इस विषय में that मोहित हो even जाते the हैं। wise people they become मोहित होने deluded. का कारण यही होता है कि ये समझ So में the नहीं reason आता है for becoming deluded is this only, that it becomes क्या difficult to परिणाम क्या understand आने वाला है। that what result am I going to get by doing this इसको action. हमें अच्छी तरह से So समझना है और ये we have योग to शास्त्र understand से ही this समझा जा सकता properly, and this can be understood कर्म only by करके क्या Shastra, आएगा, कर्म क्या because है, ये what will be the result of karma, what is karma, पता नहीं चलता है। is very difficult to लोग क्या understand. कहता है कि दान करने से It is पुण्य मिलेगा, told to us that by doing charity कि दान we will किया तो get मेरा punya, पुण्य मिल गया, तो pious result, जो मेरी but जरूरत this cannot be seen. तो दिखता नहीं है। It's not something tangible that you can see. It is a जैसे statement of हिंसा करना Shastra. होता है, Or by performing yajna, हिंसा करने से you will फल get मिलता है। pious result, or by causing violence, you will get sinful किसी मनुष्य की result. हिंसा करते हैं तो आपको कानून के व्यवस्था के अनुसार So if दंडित you होना cause पड़ेगा, violence to somebody, you लेकिन may be पशु की punishable by हत्या करते law, हो तो कानून कुछ कहता नहीं है but आपको, people kill birds, उससे animals क्या फल also. होगा, So there is nothing that क्या उससे आप there is no punishment ordained by law. May not be any punishment ordained by बिना law. किसी फल के, बिना किसी So पाप के, then, बिना what sort किसी of sinful result you will get? How will you understand? बुरे परिणाम के बच जाएंगे? क्या ऐसा होगा या नहीं होगा? So will you get any sinful result at all or no? वो तो कुछ नहीं कहती है, The law doesn't इसलिए say आगे anything आगे about that. मांस भक्षण That's करने why वाले there are लोग so many एकदम से non-vegetarians. दिमाग में नहीं आता है कि इससे So हमारा they शरीर do not विकृत think हो रहा है, that निर्जीव by हो रहा है। eating this non-vegetarian food, I am incurring some sinful इसलिए result, कहता नहीं है, because it is not उसका written क्या फल in होगा any शास्त्र ही बताता है। book of law. So then what will be the result? कर्म जो है वो Only Shastra can उसका say फल that, जो है वो हमको दिखाई नहीं because the देता, result of karma उसका कोई is not सूक्ष्म फल होगा visible. वो तो दिखेगा सामने, If there is some gross result, it can be visible, लेकिन जो सूक्ष्म उसका फल but है the subtle वो तो results हमको दिखाई नहीं देता। that cannot be that is not इसको visible. कैसे समझा जाए, So then how do we understand सूक्ष्म that? How do we इसको understand the समझने का subtle aspect of the results? माध्यम केवल हमारा So शास्त्र ही है। for that, the only way to understand is Shastra. There is इसलिए no other शास्त्र way. का अध्ययन अति आवश्यक है। That is हम why सब कर्म studying करते हैं, Shastra is of supreme importance, जैसे आप because we all do karma. किसी पर्वत पर Like पर्वतारोहण के suppose लिए if जाते you हैं, are going for hiking, हाइकिंग, mountain trekking, तो आपको पता है कि आप गिर so you सकते हैं, know that there is possibility of you falling down, because there is आपको दिखती नहीं है, gravitational force लेकिन which we cannot उसके see, फल से हम but सब by परिचित its हैं result, कि कोई but चीज़ it's we know about its result, that any हम object, भी अब अगर अपने आप को if we throw it संभालें up, it comes down, and even if we do not balance ourselves, we चाहे will हमने fall down. शास्त्र ना पढ़े हों, लेकिन So इतना whether we have studied हमें Shastra or महसूस होता no, है कि कुछ but every ऐसी person है knows by जो experience हमको that नीचे there is some खींचती है, अगर force हम in सही the से earth नहीं चलेंगे that is तो हम pulling गिर us जाएंगे। down, and if we do अगर not आपको पर्वत walk आरोहण करना carefully, है we may fall down. तो आपको बहुत And सावधानी if you are पूर्वक climbing the mountain, आपको then शिक्षा you लेनी have to be पड़ेगी, very careful. You have कुछ to विशेष get प्रकार trained. के यंत्रों का भी उपयोग You करना have to use पड़ेगा, some specific कुछ types of विशेष instruments, प्रकार के जूते types आपको of ropes, or specific types of कुछ shoes, विशेष अवस्थाओं or के लिए some आपका हेलमेट होगा। covers or ये helmet करते for the वक्त आपको head. मालूम So है why do they कि do शरीर that? जो Because है they कैसे know कैसे कार्य that करती है और this कौन is किस चीज़ how से the gravitational force works, and I may fall down जुड़ रहा anytime, है, and then I will have to suffer, गलत परिणाम मिल सकता है। or I will face तो adverse कर्म भी इसी प्रकार consequences. की एक शक्ति है, So karma is also a और force or वो shakti like हमारे ऊपर this, लागू and होती है।
it is applicable है, एक on us. प्रिंसिपल है, It is a law or a principle, का एक नियम है, like there is a law of वैसे कर्म gravitation. का भी एक नियम है Similarly, there is जो law of सबके ऊपर karma, लागू होता है and it is applicable on every human being, और मनुष्य के ऊपर विशेष तौर से लागू होता है and क्योंकि especially on मनुष्य को human कर्म being का ज्ञान because होने की बुद्धि है, only human being has the दूसरे ability to दूसरे जीव जो understand होते हैं karma. The ये other बड़े प्रेम करके species, के कर्मों के they फल are का भोग करते हैं, simply enjoying or दूसरे suffering कर्म the पैदा करते results हैं, of वो their अपने स्वभाव से ही भोग previous करते हैं, karma in previous lives. They do not वो अपने generate any स्वभाव new का karma. अतिक्रमण They कभी always नहीं करते हैं, work according to their swabhava. They never जैसी जिनकी transgress प्रकृति है their swabhava or जिस nature. प्रकार का वो Whatever कर्म nature they have उनके acquired, अनुसार बच्चे पैदा करते हैं, accordingly they संस्कार देते eat, हैं, accordingly they मनुष्य reproduce. के अंदर बुद्धि But है, human being वो ज्ञान प्राप्त करने has की the इच्छा रखता है, intelligence, has the capability to ये imbibe knowledge. स्वभाव के विरुद्ध भी कार्य करता है, That is why human beings also work जैसे against सिगरेट their पीना, शराब swabhava. पीना ये किसी का Like भी स्वभाव नहीं है, it is in nobody's swabhava जैसे बच्चों to का drink स्वभाव wine or होता है, smoke cigarette. लेकिन बड़े होकर हम इस प्रकार के कार्य In करते हैं, childhood, nobody does that. कुछ But then कारण हो when जाते हैं, people किसी को grow अच्छा नहीं grow लगता, up, किसी को अच्छा they नहीं start लगता, doing all these things. Actually, nobody likes क्योंकि वो हमारे drinking स्वभाव wine or के विरुद्ध smoking है, cigarette because it is against लेकिन our फिर भी हम swabhava. अपने स्वभाव के विरुद्ध But कार्य still, करके उसका we भोग work करते हैं, against our swabhava and उसको करते हैं, become मनुष्य के habituated, अंदर ही and then we इस continue प्रकार that की activity. So संभावना है human कि beings स्वभाव से भिन्न have कार्य it is करने की, there is possibility for human beings और to इसलिए work मनुष्य against के their लिए swabhava, and that is why कर्म का विशेष तंत्र this बनाया है, law of karma जिसमें is made especially for human beings, that पशु the पक्षी way अपने whatever स्वभाव से karma you do, accordingly you get the result. उनको इस प्रकार के नियम बनाने की The आवश्यकता नहीं है, animals, they do not वो किसी की जान को work मार नहीं against सकते, their swabhava, so there is no need of वो law किसी of की karma हत्या for नहीं them. करते हैं, They do not intentionally kill लेकिन मनुष्य anybody, करता है, but human being does क्रिया that. के रूप में करता है, तो इसलिए मनुष्य को कर्म का नियम कैसे लागू होता है ये समझना That is why it is आवश्यक important है, for human being to understand और हम जो भी कुछ how करते हैं the उसको law of समझ करके karma is करना चाहिए applicable on him or her, कि मैं ये and क्यों we कर should रहा हूँ, work इसका after परिणाम क्या होगा, understanding this. ऐसी बुद्धि भगवान ने हमको दी है, Before doing any action, we should हमको करना analyze, चाहिए, should I work, should I do this or not do तभी this? हम कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं, And उसके बाद भगवान by हमको using our buddhi only, we दूसरे can become कार्यों के लिए free भी from the क्रिया युक्ता है bondage of karma. बंधम प्रहास्य, Bhagavan had told about this earlier only, बुद्धि बुद्धि that को when दोनों ही होता है, जिससे हम निर्णय buddhi लेते हैं, means both जिससे the हमें power by ज्ञान which we होता take है उसको बुद्धि decision, बोलते हैं, और बुद्धि the को power of ज्ञान बोलते हैं, discrimination, and buddhi means knowledge दोनों also. ही प्रकार के So अधिकारों both को हम समझ सकते हैं both meanings जिससे are applicable कि here, हम कर्म that बंधन से मुक्त by हो सकें, using our knowledge, our जैसे faculty of मनुष्य को discrimination only, we ये can become free from the bondage of पता है karma. And how to कि जो understand कर्म है this? उसका हमको क्या फल मिलेगा, और हम So केवल we have उसकी to क्रिया के प्रति analyze प्रतिक्रिया ना करें, whatever karma we are going to do, what will be the नहीं, result, हमारे जीवन में क्या होता है कि and हम we should not प्रतिक्रियाएं करते हैं, simply react to whatever is happening to us. हमको कोई Generally, in our कोई life, बात we are अच्छी नहीं mostly लगी only reacting. तो फिर वो If हमारे somebody दिमाग tells में something बैठती to है, us, we do not like और that, फिर and हमारे उसके then प्रति प्रतिक्रिया that is बहुत lingering in संस्कार our से mind, निकल कर and जिसको then हम we react. इंटरनेट And कहिए especially in today's age या of internet, क्या कहें, तो ये महाजाल है, the World Wide Web. इसमें बहुत चलता है So कि it's a आपने very कुछ लिखा complicated, huge web, लिखा तो and in बहुत internet रात this भर लिखा keeps है, going on because सोशल everybody is writing something or the other on social media, whether it is इंस्टाग्राम हो, Facebook or Instagram or whatever other social media और उसके platforms are विरोधी there, and then प्रतिक्रिया people आती है, react to वो that. प्रतिक्रिया आपको अच्छी नहीं लगती है तो फिर आप अपनी And if you do प्रतिक्रिया not like देते that हैं, reaction, और ये फिर ये एक प्रतिक्रिया का जाल खड़ा then हो you जाता है, again give your own ये एक reaction. So then अंतर्जाल है, this is a separate web of action and reaction. Somebody is writing something and others keep reacting, and people again keep reacting on others' reactions. तो ये So यही this cycle goes कर्म on. बंधन इसी प्रकार से है, So the bondage of karma इसी is like प्रकार this से हम इसको only. बोलते हैं, This is called कि हम bondage of रहते karma. हैं, आप परिवार में रहते हैं तो आप
अपनी पत्नी को कुछ that we कहें do something. Let's say we are living in a family, you say something to your wife, then she will reply, and then you will reply. और केवल वो And बोलने से नहीं होता, उसकी it प्रतिक्रिया is भी not होनी just चाहिए। because by speaking, कहते हैं मानसिक स्तर the पर। reaction happens first at the mental level. At the mental level, we keep thinking how to react. Our emotions get triggered. चिंता होती है, कुछ Then we पसंद feel करते हैं, happiness or suffering, कुछ something we like, something we don't like, something is favorable, something इस is प्रकार से unfavorable. हम कर्म के बंधन में पड़े रहते हैं। In this way, we remain तो इसलिए bound भगवान यहाँ इस श्लोक में by कह रहे हैं karma. कि That's why here कर्म Bhagavan is कर्म telling in this verse that इसको what is karma, what is समझना चाहिए। akarma. It is important to understand this इतने अच्छे अच्छे because लोग भी even great wise मोहित हो people जाते हैं इन also गोपियत में। become deluded in this regard कुछ कथाएं इस प्रकार की हैं कि because some समझ में नहीं आती हैं। stories are like this that कभी is very छोटा सा difficult कार्य to हमको understand. बहुत बड़ा परिणाम Sometimes देता है। some small समझ activity के बाहर है कि ऐसे brings कैसे हो very great result, कैसे and then we find very difficult to understand how is it राजा possible. जनक की कथा Like for है example, in Śrīmad-Bhāgavatam, we have कि studied the बहुत बड़ा Katha दानी of King Nriga. So Nriga was a और very उसको पुण्य great बना। donor, and especially he used लेकिन to उसने donate कभी देखा cows. होगा कि In जितना Bhagavatam, it is आकाश में also written जितनी that गायें उसने as many stars are there in the sky, that many number of उतना ही cows were donated by him. उसका अर्थ So ये है obviously, it is not possible कि to donate that number, और एक but it छोटी सी indicates गलती that he होगी used to उससे donate a huge number. But he just made a उसकी small उसने mistake एक गाय एक that ब्राह्मण को दान की थी। he had already और वो donated a गाय cow to a Brahmana, ब्राह्मण से and घर से भागकर that cow वापस ran दूसरी away गाय from the के home of पास the चला गया। Brahmana and राजा again को इसका पता नहीं था, went and तो अगले दिन उसने joined दूसरे ब्राह्मण से the group of cows. So the king did not know that, दूसरा and then ब्राह्मण he donated the cow to the other Brahmana. देखने वाला अपनी गाय को So, ढूंढ रहा था। when the Brahman ऐसे was इसने taking the अपनी cow, गाय the को other Brahmana noticed and he accused that you are taking my देखा cow. तो उसने कहा नहीं तो मेरी है So the राजा, one who was taking the cow, so इसने राजा ने मेरे को दी थी he told that और this was इसलिए ये donated by झगड़ा the खड़ा king, हो गया। and the earlier brahmanas then started बहुत बड़ा fighting. No, this was donated to me. Then both of them went to the इसको king, समझ में आई कि क्या and the king गलती understood हो गई, that गाय what भागी और mistake has इसने मेरे happened, पीछे दौड़ते that the दौड़ते cow that I had donated yesterday और to मैंने the उसको brahmana, परेशान कर दी। now that तो cow शास्त्र के अनुसार ran away and joined the group and I donated it again. Now according to ये बड़ा दोष shastra, माना it जाता is है, a great अपराध दोष बोलते हैं। dosh to take back whatever we have भगवान donated. ने जो चीज दे दी है उसका फिर Whatever you have given, वापस लेना taking it back, ये भयंकर अपराध माना जाता है। it is considered a great offense. तो इसलिए राजा ने समझा कि चलो मेरे से So गलती the हो गई, king understood that yes, I जिसके made a पास वो mistake, गाय थी and वो whichever ढूंढ ली Brahman गई, तो उस ब्राह्मण से कहा कि मैं to आपको whom दूसरी the गाय दे cow दूंगा। was originally donated, ऐसे he proposed that I will give you another cow. मेरे को Let दिखाई him जाए। take this cow. So the Brahmana said that उसने no, I want this अपनी only. दूसरी Then गाय he दे दी requested the other Brahman that you please take another और cow. इसको अपना अहंकार का विषय बनाकर So both the Brahmanas took this to their स्वार्थ का ego, विषय and बना it लिया। became an ego fight. दोनों इसी पर लड़ने लगे, तो उसने कहा कि आप 100 गाय ले लो, So 1000 गाय ले Brahman लो, said that take जितनी 100 cows, take thousands of cows, और फिर उसको but राजा they ने did not agree, क्रोधित होकर श्राप दे दिया और चले गए। and they अब ये गलती तो बहुत cursed छोटी the सी हुई king उनसे and went away. और वो भी So this was a जानबूझकर very small अपनी mistake जान by the के king, जोखिम and में that too unknowingly. और He did उसने not आज do भी this अपनी गाय को knowingly, 1000 गाय देने के लिए तैयार and है। he was ready to give even 1,000 cows तो इसी गलती के कारण to अगले repent जन्म for में the वो sin. राजा का So due चरित्र to this बदल गया mistake, in the next life he और was बहुत वर्षों तक चिपकली बन के born as a lizard, रहना पड़ा और वो and he चिपकली had to remain like धरती this के for किनारे many से धरती के years. इधर उधर And it उड़ता was रहता not था। that उसकी it was a पूरी lizard आंखें in some बंद home, थी और एक कुएं में, but it was a lizard of great वो हिल size भी नहीं सकता and था। was उसको in a well, so you can't even move anywhere, just remain ये there. छोटा सा कर्म So now see, one small और उसका कितना karma बड़ा परिणाम। and such a big result. तो इसलिए इसलिए भगवान That is कहते हैं why कवियों को Bhagavan says कि बड़े बड़े कवि भी इस विषय में मोहित हो that जाते हैं। even great wise people also become तो deluded in इसलिए this regard. बहुत बार जो लोग भगवान की भक्ति में विश्वास नहीं करते हैं, That's भगवान के why नाम में many विश्वास of नहीं करते times हैं, people who do not believe in the power of bhakti or भगवान harinam,
They say that what is the use of chanting Harinam? This is all nonsense. What is the use of taking bath in Ganga जीव तर जाते हैं तो मीन क्यों ना तर गए जिसका जल में ही if रहता है। if by bathing in Ganga a human being becomes liberated, then why are the fishes in Ganga not getting liberated? जाते हो तुम्हारा पाप कट जाता है, तो इसमें जो मछली रहती There is a song also like this that if you are getting liberated by bathing in Ganga, why are the fishes not getting liberated? और बड़े बड़े So, like this, संतों के वचन हैं इस प्रकार के, and big, big, great saints, हरि they have also spoken like this that if I can get Hari by worshipping stone, then I am ready to worship even a mountain. प्रसिद्ध संत हैं, Kabir was a very famous पंथी है saint. कबीर पंथ, He has a whole pantha, sect of his own, Kabir sect. पूजने से So he said that by मैं तो पहाड़ worshipping stone, if I can get Bhagavan, then I am ready to go and worship a mountain also. पत्थर पूजा करने से So he says that भगवान what is the use पत्थर of worshipping deity? So he says that deity worship is like worshipping stone. जिससे आप आटा पीसते हो, कम से कम उससे भोजन तो मिले। Better than that is grinding flour. तो इस प्रकार At least के you will get atta and feed your निकाल stomach. सकते हैं, So these kind of ideas नहीं है can bewilder इसमें us, शास्त्रीय but this is not true. That's why Bhagavan says that in this matter, Shastra is the Praman. केवल We all एक know the नारायण के katha of Ajamil. Just by uttering विष्णुदूत प्रकट name हुए of और यमदूत Narayan, भगा the दिए, Vishnu Dutas appeared तो ये and they आश्चर्यजनक drove बात है। away the Yamadutas. लोग So this is great सालों साल surprise. भगवान का नाम जपते हैं, People are एक बार chanting उसने नारायण अपने year बेटे को after बुलाया year, nothing is happening, तो उसको but इतना बड़ा he यश just प्राप्त chanted हुआ। name of Narayan once and he got such a great ये result. समझने वाली How? बात है, इसी के So लिए this is what we have to understand. That's why Bhagavan says कि इस विषय में कवियों that के in this कहने regard, से हमने कहा even कबीर जी great महाराज wise जैसे लोग people इस प्रकार से बोल रहे हैं, or saints, like I said about तो इसका Kabir अर्थ क्या होता है? or some other saint who said that what is the use of doing all this? So even they become bewildered. क्या है Now, what is their bhava, with what bhava, what motivation they have said, I don't know. But the literal meaning is this only, बोल रहे हैं, that he is speaking against deity worship. तो इसलिए समझना आवश्यक है। That's why it is important to भगवान ने पहले understand भी all कहा था this. ये But बात, Bhagavan had told earlier also योग है कर्मसु कौशलम, that कि कर्म में जो है वो योग ही कुशलता है, यानी कि जिस yoga is the kushalta in karma, yoga is the पर कर्म करते हैं expertise. That when you are situated in yoga, then that karma becomes akarma. दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्यो सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो भगवान बार बार यही कहते हैं, उनकी ये So शिक्षा Bhagavan है tells this again and दूसरे again. अध्याय में, This तीसरे is his अध्याय में, instruction in the second, third, fourth, कि fifth आप योग में chapters स्थित होकर that कर्म कीजिए, be situated in yoga and जब आप perform योग में karma. स्थित होकर कर्म And करेंगे तो फिर when वो you will do karma by being situated in कर्म जो yoga, है वो कर्म ही then रहेगा और that कुछ karma नहीं। will no longer be karma, it will convert to akarma. लेकिन योग में स्थित होना तो आसान काम है नहीं। But it is not easy to become situated in योग की yoga. जो उनकी व्याख्या है, The समत्वम योग उच्यते, कि समता की स्थिति में रहना, explanation of yoga that he gave और is समता की स्थिति में equanimity, आप तब तक to नहीं रहेंगे remain जब तक in आप अपनी बुद्धि का equanimity. उपयोग नहीं करेंगे। And you cannot remain in बुद्धि पहले equilibrium तो विषयों में unless भाग you लेती है use your buddhi, और because मन the हमेशा thoughts बार that बार we विनाश get, की they तरफ are आकर्षित होते always चलता है। disturbing our balance and peace of राग द्वेष mind. का मतलब ये Our होता है mind works on समता, raga and raga and dvesh और भगवान कहते mean हैं कि योग का disturbance. मतलब होता है समता। But Bhagavan says yoga means तो समता free के from आधार पर disturbance, being in equilibrium, equanimity of mind, कर्म के प्रति जो हमारी meaning आसक्ति that है, whatever वो attachment we छूट have जाए, to karma, to result of karma, to rise above that and तो then ये perform karma. पहले तो समझ नहीं आती है ये बात, First of all, it is difficult even to understand this because लेकिन जो भी पूछता time and है again this question is raised वो that how is this possible? Because चेष्टा whatever यही करता है, we do it to पहले get चेष्टा से result ही वो only. कार्य करेगा। And who will work without desiring तो result? यहाँ ये कहते हैं कि उसी में योगस्थ गुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर आप And कर्म here करेंगे Bhagavan is तो saying that संभव remain होगा, situated in yoga and then फल work. प्राप्त नहीं होगा, या आप
काम ऐसे ही मूर्खता के से कार्य करते रहिए, आप कोई योजना नहीं बनाते हैं कुछ So, प्राप्त samatha, equanimity does not mean that you do not make any plan, you do not want to get any result. तो But आपको what it ये means is एहसास that you होगा will कि आप not be attached to the result. सेकंड Because if the result is favorable यही or समझ unfavorable, in both यही situations, समझ you remain भगवान peaceful. सिखाते हैं। This is what Bhagavan is इसलिए teaching. भगवान कहते हैं कि मैं आपको ये शिक्षा दूंगा, तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज् ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्, कि आप अशुभ से यानी कि कर्म बंधन से कैसे मुक्त हो So, जाएंगे। Bhagavan is teaching how you will become free from the bondage of karma. That is what I will teach now. आचार्यों ने ब्रह्म भी किया है, Some acharyas have explained akarma as Brahma निष्कर्म also, शब्द होता है, like Nashkarma, निष्कर्म का अर्थ Nishkarma, ब्रह्म होता है, Nash, ऐसे अकर्म का अर्थ भी ब्रह्म होता है। Nashkarma means Brahma also, and Akarma also means Brahma. And Brahma, if you analyze also, Brahma is a state of equanimity because there is no Raga Dvesh there. So, this meaning आचार्यों has ने किया है। also been given by some acharyas. फिर आगे इसी पर बल Then, देने के in लिए the next verse, दोबारा फिर in कहते order हैं to emphasize this, he कर्मणो speaks ही this point again. कार्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। तो भगवान कहते हैं कि मनुष्य को So, निर्धारित translation, one should understand the truth about prescribed action, सत्य का prohibited action, and inaction, कि कर्म की since the internal mechanics of action are difficult to grasp. तो जो पिछले श्लोक में बात कही थी उसी को So, what फिर he से had भगवान told in the previous verse, और ये he is इसलिए telling that again बल देना in चाहते हैं इस बात other words, क्योंकि कई and he is speaking this because he wants to emphasize on this point. Because generally, सोचते हैं कि इसमें क्या we fail इसमें to क्या है, reflect on कि this. हम कुछ कर्म करेंगे तो उसका परिणाम आएगा। We think that yes, we know that if we do something, we will get result. ऐतिहासिक शब्द है, But here, ये एक तकनीकी शब्द है। karma is a technical word, not to be understood just in the general sense. It does not mean just some activity. It has its own यहाँ technical एक meaning. नया शब्द और कहा है, So here Bhagavan has पिछले used a श्लोक में new word. कर्म और अकर्म की बात In the previous verse, he just spoke about karma and akarma, but here has also added vikarma. So vikarma निषिद्ध कर्म को बोलते हैं। refers to प्राय करके हमारे prohibited शास्त्र action, nishiddha karma. दो प्रकार के Generally, वाक्य in मिलते our हैं, shastra, we get two types of statements generally. जिनका One एक is है विधि prescriptions, और the एक है vidhi, निषेध। and others are the prohibitions, nishedh. तो प्राय करके कर्म भी दो प्रकार के हैं, एक नित्य कर्म या विहित So कर्म generally, karma is of two और types, दूसरा जो है वो निषिद्ध prescribed, कर्म, and यानी कि एक तो वो कर्म जिनके the लिए other is शास्त्रों the को nishidha आदेश karma, दिया prohibited कि action. इस प्रकार के कर्म One करने is for चाहिए, which the Shastras prescribe ऐसा us नहीं that करना this is चाहिए। what we should do or what we should सत्य not बोलना do. चाहिए, ये एक विधि वाक्य है, So we should ये speak the truth. This is what we have to और do. हिंसा नहीं करनी चाहिए, ये निषेध वाक्य है, And ये what we विहित should वाक्य not है। do, that is Nishedh. तो इसलिए वो कहते हैं कि इसको हमें समझना है, So he says that this is what we have to understand. कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। We have to understand what is समझना karma, what is akarma, what is vikarma. क्यों? क्योंकि कर्म की गति गहन है। Why? गहन का मतलब वास्तव में So होता है बहुत the चीज़ों को internal समझने mechanics में, of karma are very difficult to understand. और Gahan कर्म भी here एक means गहन very जंगल है, dark, very deep, dense jungle. पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे से मिलती Gahan हैं, here जिनसे means आप dense, जा like नहीं a dense सकते, forest, उसको so गहन where you कहते हैं। cannot travel, very तो difficult. एक कर्म का भी एक जंगल है, एक So जंगल this karma is also like a जहाँ very से पता dense नहीं चलता है, forest because here you do not understand, भ्रमित हो जाते हैं। you become पिछले bewildered. श्लोक में उन्होंने कहा So कवियोप्यत्र as he said in the previous दूसरी verse, दृष्टि से कहते हैं कि ये दुर्ज्ञेय है। गहन का here he is मतलब telling it in another way बहुत ही कठिन है, that it is very difficult to इसलिए इसको understand the समझने का हमें mechanics of प्रयास करना karma. चाहिए। That is why we should strive to केवल understand. कर्मणा गहनो गति, कर्म की आंतरिक प्रक्रिया को समझना कठिन है। वो केवल कर्म ही नहीं, अकर्म और विकर्म दोनों And this what is difficult to understand is not just karma. It is for akarma and vikarma also. Here karma indicates akarma and vikarma also. अच्छी तरह Meaning से हमको
that all the three we should strive to understand properly. All these three, karma, akarma, and vikarma. कर्म करते हुए So, निर्लिप्त रहना, while ये performing उसका karma, कर्म का how तत्व है to remain detached. कि मैं This कर्म is करूं the tattva of karma, और that I perform karma, उसमें मैं फंसूं ना। but I do not become implicated. अंग्रेजी में कहावत है कि टू कैच So बिग it फिश is नॉट गेट वेट, said in English, कि आप बहुत बड़ी मछली पकड़े हैं लेकिन पानी में भीगे ना। to catch big fish but not become wet. या गीता में उदाहरण देते हैं पद्म पत्र Or योजना like it is said in the Gita, like like water का on पत्ता रहता है, lotus पानी में leaf. फ्री रहता है लेकिन वो गीला नहीं The होता, पानी उस पर टिकता है। lotus leaf is in water, but water doesn't stay there. Water does not make it इस wet. प्रकार से जीवन में रहना है, So क्योंकि कर्म तो to हम live like this, because we have to perform karma. क्षणमपि जातो तिष्ठति कर्म कृत। भगवान कहते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो Bhagavan क्षण भर says भी there is no person like बिना this कर्म किए रह who can live even a moment जाए कि without भाई मैं performing नहीं karma. करूँगा, So somebody may say that no, I will not do कोई anything. काम नहीं करता है Generally, तो the उसका person who इंटेंशन क्या होता doesn't है, do बैठा anything, रहता है, पड़ा we say रहता है, that this person doesn't do anything, he doesn't do any job or anything, he just remains lazy. वो भी कर्म कर रहा है। So he is also doing some karma. वो ना करना उसका हमारी एक स्थूल दृष्टि से ना Not करना doing anything is just in our gross vision. But from the point of view of karma, he is also performing karma, because he is also bound वो भी by खाता है karma. पीता है तो He कहाँ से आता also है, वो किसी न eats, किसी drinks, so he is getting it कहाँ from से आता somewhere, है तो उससे and from उत्पन्न होता है। wherever he is getting it, ये he becomes पंचीकरण bound by that. तो इसलिए उसका खाना भी बंधन बन जाता है, So his उसका चलना फिरना भी eating also बंधन बन becomes जाता है, bondage. यानी कि उसका कर्म उसको Everything becomes बांध लेता है। bondage, meaning his karma is मनुष्य जीवन बड़ा binding विचित्र him. है, So human life सुनाई is नहीं दे very रहा strange. तो भी आप कर रहे हैं, Here, even if you are not doing मनुष्य anything, still जीवन you are बड़ा doing something and you are getting bound by it. ऋण है, Because every person is born with debts. पितृ ऋण, ऋषि ऋण, Debts to देवता forefathers, ऋण। the rishis, the devatas, हम to प्रकृति से human जन्मे society, हैं तो इसका ऋण to है, the nature. सांस ले रहे हैं तो इसका भी ऋण है, We are taking so many things from nature. We are indebted. We are breathing. We are indebted. तो हमारा We are जीवन जो born है from our parents. We are indebted वो to ऋण them. से पूर्ण है। So our life is full जैसे of आजकल लोग debts. वो क्रेडिट कार्ड रखते हैं ना, Like nowadays, people keep credit card क्रेडिट कार्ड के ऊपर वो and भरते रहते हैं, they उसके keep ऊपर ऋण रहता buying है। through credit card. तो So मनुष्य they जीवन remain उसके लिए indebted. उसके लिए एक ऋण है। So human beings' entire life किसी परिवार में is पैदा हुआ है bound by तो उसी debts. परिवार में If आपको you are मरना भी born है, in a family, then the question is, why were you born in that family कुछ only? ऋण है, तो Because आपको ऋण you had चुकाना some है। debts towards that family. Either you have कई बार to ऐसा होता है कि बच्चे repay पैदा or होते they ही, have to repay बच्चे you. पैदा होते ही So sometimes व्यवहार it में happens that some children are born in a family या and तो उनका from पैर beginning टूट only they जाता are है या कुछ चल नहीं physically पाते हैं, कुछ handicapped. अंधे पैदा होते हैं, They cannot तो walk आंखें नहीं properly, or दिखती, some are born तो blind or देखभाल करनी whatever. पड़ती है। So the parents have to तो इसका take मतलब ये lot है कि of वो extra ऋणी care नहीं है, for such children. वो उसका So the जीवन जो है point वो is, ऋण चुकाने के लिए ही हुआ है, मतलब दूसरे से लेने के लिए ही हुआ है। the parents are actually माँ repaying बाप the ने debt इसको इन्होंने that they पाला had to होता है their child earlier. तो अब वो चुका रहे हैं इसको। So they are just बहुत पैसा repaying. लगाते हैं, बीमार रहता है, They spend lot of money, the child remains ऐसा तो sick. अनेक बार होता है, अनेक बार होता है। Often such cases are heard of. एक उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि किस So I'm प्रकार just से telling as an example ऋण that लेन how देन चलता है। our life is किसी ऋण लेना just है, a transaction किसी का of देना है, इसी प्रकार से repaying हर debts संबंध and बनता है। collecting the repayments from जितने others. भी संबंध And बनते this हैं is how the relations किसी के are साथ में made. हमारा Whatever relations we किसी have, के if साथ we में are दोस्ती born बनती है, किसी के from साथ में प्यार बनता है, तो वो किसी भी someone, अचानक तक नहीं we बनता, marry somebody or fall in love with someone, so it अचानक just बनता है, doesn't happen दिखता नहीं है। suddenly out of the blue. There is a great इसीलिए हमारे mechanism जो of karma आत्मा going है behind वो एक that. दूसरे के प्रति It is बहुत not accidental. Why we become attracted to somebody and not to somebody क्यों else? आकर्षित होते हैं, Why उसका we only कारण become हमें समझना attracted to पड़ेगा। that particular boy or उसमें हमको girl, ऐसी क्या विलक्षण चीज लगती है कि
and why the other person did not become attracted. What is this, what is so special that we found attractive but others did not find attractive? So this is a nothing but a bondage due to debts, तो उस पर हमारा जीवन चलता है। and our life और continues मनुष्य जीवन by मिला that. है कि हम उससे And we have प्रभावित होकर got this human form दुष्परिणामों of को life भोगें। so that we repay the debts but do not create new debts. तो जो हमारी भारतीय व्यवस्था में बताया जाता है So whatever कि is आप said in our Indian अपना देव ऋण चुकाइए तो उसके लिए culture यज्ञ कीजिए, system, that फिर do yagyas श्राद्ध for कीजिए, repaying the debts to माता पिता को devatas, do shraddha for repaying debts to forefathers, serve the चिकित्सा parents कीजिए, to repay सहायता debts to them, दूसरे uh, जीव जंतुओं का serve guests, उनको भी दीजिए। तो ये यज्ञ की जो प्रक्रिया बनाई थी feed इसलिए the animals, birds, देवराज etc. प्रजापति So the yajna भगवान system that was तीसरे made, अध्याय में as Bhagavan said in the third chapter, सृष्टि के that आरंभ में Brahma in the beginning of creation यज्ञ पैदा किया, gave yajna क्योंकि to यज्ञ human का अर्थ beings. जो He होता created है the system of yajna, सैक्रिफाइस बोलते because हैं, yajna means what? In English we call it sacrifice. Sacrifice means to give up something from our जिससे side, हम to तृप्त share some होते हैं। property. तो ये जो देवता So हैं we ते give देवा in yajna. भावयन्तु, So the न devatas कामयतानि न ते देवा भावयन्तु, परस्परम परस्परम भावयन्त श्रेय परम वाप्स्यत। तो एक दूसरे के सहयोग से हम चलते हैं और so इस we प्रकार से work with the cooperation with in cooperation with the जीवन से मुक्त devatas. रहेंगे So if we और do yagyas नया like जीव this, पैदा then करेंगे। then we become free from the इसीलिए debts and भगवान ने कहा कि we do नया not चक्र create new बनाइए, debts. That's why Bhagavan said that और I have पुनः created this cycle. तो ये एक बड़ी व्यवस्था हमारे शास्त्र हमको समझाते हैं। So this is लेकिन a आज great हम इसका आदर नहीं करते, system that Shastra teaches हम us, देखते हैं but जीवन nowadays we do not respect this system. That is why you बिगड़ जाता see है। that there is so much of chaos कोई भी in अगर everyone's life, whether अमीर that है person is वो भी rich or अशांत है, poor. गरीब लोग वो भी Rich अशांत people है। are also तो ऐसा disturbed, क्यों है? poor are also क्योंकि हम disturbed. इस कर्म So के why is तत्व it को like नहीं this? समझे Because we do not understand the mechanism of karma, और the कैसे tattva ये of कर्म से karma, बंधन होता है, कैसे हमारे how karma leads बंधन to है और bondage, किस किस प्रकार से हम उसमें फंसे हुए हैं, how we are bound by this karma. ये हमारी समझ में नहीं आता है। So we do not और न understand समझने के this. कारण जो है And due to not understanding this, विकर्म किए जाते हैं, we continue doing निषिद्ध कर्म। vikarma, nishiddha karma, prohibited दूसरा ये है action. कि कभी कभी We क्या होता continue है doing what we are not कि ये supposed to do. कर्म Another point निषिद्ध कर्म is that इनका आपस में तनाव हो जाता sometimes है। there is conflict between prescribed and prohibited ऐसी action. स्थिति आती है Such कि situation हम कोई भी arises कर्म करते that हैं if you तो उसका perform परिणाम prescribed action, it has some result. उसका परिणाम गलत निकलता है, If we और उसी perform कर्म करते prescribed हैं action, it तो gives उसका परिणाम wrong अच्छा निकलता result. है। But if you तो ऐसे perform prohibited action, it gives good result. Sometimes such इसमें आप situations arise in life. So in this situation, now what to do? जैसे उसके उदाहरण के लिए For example, एक like बात सुनाई जाती है a story is कि narrated for this, एक that कसाई है there was a butcher तो गाय को and काटना चाहता है, he wanted to तो kill a गाय cow, भागकर भाग but जाती the है, cow escaped and ran कसाई उसके away. पीछे दौड़ रहा है, And the गाय butcher was running पीछे दौड़ रहा behind है the cow, कि and अरे the वो cow गाय तो was बेचारी running at high speed, किधर and चली गई, the तो cow ये just turned जाता है। somewhere, तो entered in कसाई the उसके पीछे forest, पीछे दौड़ रहा है। and the butcher is running तो behind the जब वो cow. जंगल में पहुंचता है तो And when he जंगल में enters एक the साधु जी forest, बैठे हुए हैं। then साधु beneath a पूछते हैं tree, कि he finds a अरे sage गाय तो sitting there, and he asks the sage that, "Did you see any cow साधु जी going in this direction?" समझते So हैं the sadhu now is in कि एक तरफ तो trouble, शास्त्र कहता है because on one side Shastra says कि speak the आपको truth, सत्य बोलना चाहिए, you should be truthful. लेकिन अगर वो सत्य On the other बोलेगा side, if he speaks the truth, तो गाय की then जान जाएगी the cow will be कि वो killed, दौड़ कर गई तो because the cow actually ran in that direction only. तो अब वो विहित कर्म यानी कि जो शास्त्र So कहता है कि now आपको सत्य बोलना चाहिए, what वो should he सत्य do? बोले या ना बोले। Should he speak the truth सत्य or नहीं बोलता है तो should निषिद्ध speak कर्म lie? करता है, If he speaks the truth, लेकिन अगर then निषिद्ध he is कर्म doing करता है तो गाय बच जाएगी। prescribed action. But if he speaks lie, then the cow और will be विहित saved. कर्म करता है If he जो शास्त्र कहता है कि आपको करना चाहिए तो गाय की जान जाएगी if he और उसमें वो भी भागी बनेगा फिर।
speaks the truth, the cow will be killed, and then he will also become implicated in the sin of killing cow, because it is the sadhu only who will end up saying that this is the direction in which the cow ran. So now this is a complicated situation. So here you have to analyze which karma is correct, which karma should be done, the prohibited action or the prescribed action, which one should be done. तो इसलिए भगवान कहते हैं कि That's गहना why कर्म Bhagavan says that the mechanism of karma गति जो is है very complicated. It is like a dense युधिष्ठिर forest. महाराज को भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि Bhagavan told आप Yudhishthir द्रोणाचार्य Maharaj से बोलिए that कि you अश्वत्थामा go and tell Dronacharya मारा गया। that तो Ashwathama वो कहने के लिए तैयार नहीं has था, वो died. तो झूठ Then बोल he रहा was था। not ready to say this because this is lie. अब एक तरफ तो वो युद्ध कर रहे हैं, On one side he is द्रोणाचार्य fighting से in the बोलिए war तभी मारा जा and सकता है। Dronacharya उसके can be बाद killed. द्रोणाचार्य ने How he can be युधिष्ठिर killed? को साफ साफ Dronacharya had told Yudhishthir earlier only अपने धनुष that और तीर as को long as I have छोड़कर bow and arrows in my hand and I am कोई on the ऐसी शक्ति chariot, नहीं है जो मेरे there को is रोक no सके, power in the three worlds लगा that मुझे। can defeat me. Dronacharya himself had लेकिन अगर मैं अपना said this to धनुष और छोड़कर Yudhishthir. बैठ जाता But हूँ if I give up my bow and arrows and sit, कितना बड़ा then somebody can धनुर्धारी kill वीर me. था, This was the power of कैसे मारा Dronacharya. जाएगा ऐसे नहीं था। He was so expert in the art of तो एक तरफ तो ये है कि archery. उसको अगर मारना है तो So झूठ on बोलना one पड़ेगा, side, क्योंकि उसने कहा था if कि you मैं have to kill Dronacharya, you have अपना to पुत्र tell मारूंगा, lie, because Dronacharya had इसलिए said मैं that मारूंगा फिर मैं नहीं I मारूंगा, will not be able to क्योंकि मेरे tolerate पुत्र में the बड़ी news शक्ति है। of my son dying, because द्रोणाचार्य ने ये I am very attached to my son. सामने Dronacharya himself had told you this to Yudhishthir in the beginning of the war, आशीर्वाद लाने के लिए गए थे। when Yudhishthir had approached Dronacharya to seek his best युधिष्ठिर ने पूछा blessings, उनसे because Yudhishthir कैसे Maharaj had मारेंगे, asked him that how can we kill you? तो उन्होंने साफ साफ बता दी कि मेरे को So Dronacharya said that this is the only way to kill me. बड़े निष्कपट भाव से उन्होंने बता दिया Without any कि duplicity, कैसे he मारा जा told सकता है। honestly to Yudhishthir बड़ी दुविधा the में थे secret युधिष्ठिर, how he क्योंकि can be killed. युधिष्ठिर को धर्मराज कहा But जाता है, now it was a great mm, धार्मिक पुरुष हैं, difficult situation for Yudhishthir, because he is अधार्मिक Dharmaraj, he is अधार्मिक पुरुष हैं। personified Dharma. He can give up his इसलिए life उनसे but कहा not गया do कि any झूठ बोलना adharma. चाहिए, क्योंकि But now he is being asked अगर by झूठ Bhagavan to बोलेगा go and tell a अश्वत्थामा lie तभी मेरे को to बचाएगा। Dronacharya, because Dronacharya had said that only if Yudhishthir tells this to me, then I will believe, because I don't trust Bhima and others, because I know they can lie दुविधा also. आई ना उनके सामने, So now this तो is वो नहीं a चाहते हैं, तो ये द्रोणाचार्य perplex, नहीं मारा जा सकता it's a difficult situation for Yudhishthir. Should he speak the truth or तो lie? झूठ बोलना पड़ेगा। If he speaks the lie, इसलिए it is. भगवान ये कहते हैं कि गहना कर्मणो गति, के So जो that's why Bhagavan is saying that ये Gehna Karmano Gati, that गहन it's है, very difficult to खास तौर से understand the mechanism of karma. It's very क्या dense करने and से कर्म complicated, एक दूसरे के सामने खड़े हो especially जाएं, when उनके prohibited and prescribed actions start विरोधी हो जाएं, opposing each other, that what should be done and what should not be done. इनको जानना आवश्यक है। So it is very important to और understand ये this. इनका जो मूल कारण है विकर्म का, कि व्यक्ति विकर्म क्यों करता है, Why does a person तो इसका perform prohibited action, vikarma? So Bhagavan had answered this earlier only. एक तो Arjun had asked Bhagavan पूर्वम चरति that पुरुषो why does a person, प्रच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजित। अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा था कि व्यक्ति जो है ना जानते, ना इच्छा ना होते हुए भी पाप कर्म क्यों करता है, जैसे Arjun कि had asked that even unwillingly, पाप why कर्म करने का मूल कारण क्या है। unwillingly why people तो perform बड़े स्पष्ट रूप sins? से उत्तर What दिया is the main reason? काम ये So Bhagavan कामस्य replied very धर्मात्मनोऽपि clearly. महापापमा विद्धि एनमिह वैरिणम्, कि जो काम है यही महापापमा, यही पापी है, इसी के कारण So व्यक्ति Bhagavan said that this पाप करता है। kama, lust, this is the reason. It is the great sinful enemy because of which a person भोग performs कामना के लिए prohibited मूल action. कारण है। So if a person performs prohibited कभी ऐसा action होता है कि व्यक्ति का just स्वभाव to ही ऐसा fulfill होता है, material desire only, जैसे आपने देखा sometimes होगा it becomes a swabhava. तो कोई
Like you must have seen, like children are playing, some ant is going and they just kill the ant. तोड़ देंगे तो उसमें उसको आनंद नहीं So आता है। they sometimes they torture हाँ the जैसे a small animal, उसको ये insects. नहीं है कि So इसको the child doesn't have any intention of ऐसे कुछ व्यक्ति giving होते pain. हैं जो It is just a habit. जिनको क्या बोलते हैं सैडिस्ट So some people are sadists. पर दुख रीति रति They are उनको attached दुख देने में to giving pain to सिर्फ others. They आनंद आता derive है a lot of ऐसे भी pleasure व्यक्ति होते हैं in inflicting pain on छोटे others. कद के Such छोटे people also exist. They feel a lot of happiness. तो कारण वो कामना ही है So the reason is इसको हमें the समझना पड़ेगा कि desire कौन only, सी वस्तु kamana. है जिसके कारण So हम we have दुखी to होते हैं और understand जिसके कारण हम that what is that particular desire मेरे for को which उसका I am doing सोचना this पड़ेगा sinful फिर activity. मेरे को उसका And if I कारण can निकालना understand पड़ेगा this, समस्या then निकालने का I have to तरीका find the solution ताकि मैं उससे बच सकूं so that I तो इसलिए mm, भी विकर्म remain safe away कर्म from performing ये that समझना prohibited है कि कर्म action. क्या है कौन कौन से So it is not just क्या है sufficient to विकर्म understand what is vikarma, which ये भी actions are समझना है vikarma, but also to analyze इसके that पीछे मूल कारण क्या है what is the main कि reason विकर्म behind करना why person अगर वो performs कर्म नहीं करना vikarma, चाहता the prohibited actions, तो and उसका why he कारण doesn't want to perform मोह prescribed action. Why? आलस्य के कारण मोह Is के it due कारण to laziness or moha? होता है ना ऐसे तो उसको भी देखना पड़ेगा तमोगुण का प्रभाव रहता है इसलिए नहीं So you होता have to understand that also तो because इन there is सब का influence अर्थ of ये है tamogun also. कि So all this किस प्रकार means व्यक्ति जो है वो कर्म करे और विकर्म में ना फंसे और अकर्म that how यानी कि to कर्म do से karma निवृत्त and होकर remain away from रहना चाहिए vikarma, remain detached. अकर्म है This is दोनों akarma एक ही रहते actually. हैं Action is same इसमें only, हमारी वासना क्या है हमारी इच्छा क्या है हमारी but what is the vasana, the उसके desire कारण जो है behind that? वो भेद हो जाता है अब यहाँ That is what प्रायः जो distinguishes. शब्द है इसका श्री So रामानुजाचार्य here ने बड़ा विलक्षण अर्थ किया है प्राय का the मतलब vikarma ये word है is there, कि आचार्य which विकर्म का Sri अर्थ Ramanujacharya has निषिद्ध explained कर्म very nicely, ऐसे uniquely. नहीं विकर्म का Generally, अर्थ Acharya say it निषिद्ध means कर्म prohibited क्योंकि action, कर्म के but जो Sri प्रकार Ramanujacharya हैं says it means वो कर्मोद्भवी vividita, variety. हैं और कर्म के जो भेद हैं The different divisions of karma, कर्म nitya, कर्म naimitika, इस प्रकार के prayaschitta. जो भेद हैं तो विकर्म शब्द का ये अर्थ करते हैं So this is the meaning he gives to that karma. ये उनका That to understand this also. अपनी अलग दृष्टि So है this is his vision. तो ये कर्म का विषय बहुत गहन है इसलिए इसको So this karma विकर्म topic is निषिद्ध very deep जीवन में and कर्म करना है complicated. So we have to study that, understand that, because we all perform karma in our life. We और cannot हम ऐसा live करते without हैं performing इसलिए karma. And when we have to anyway perform कोई भी karma, व्यक्ति जो then है why वो not दुखी होना नहीं do it चाहता है properly? हम सुखी होना Because चाहते हैं nobody wants to और suffer. सुख दुख We all जो want to है be वो कर्म happy, पर ही निर्भर and करता है happiness depends कर्म on का है उस पर ही निर्भर our करता है karma only. सुखाय कर्माणि करोति लोके न तत्सुखम अन्यथा पारमं कार्य कर्म तो हम सुख के लिए करते हैं कोई भी व्यक्ति दुख उठाने के लिए कर्म So नहीं we करता perform karma to be happy only. Nobody यहाँ आचार्य performs karma to suffer. But then the confusion यहाँ is उसी that बात why को do we suffer even though we performed विशद रूप karma से for बताया है कि happiness? कर्म क्या So है we can understand this only when we understand what is karma, what is akarma, and तो vikarma. शिक्षा भगवान इस श्लोक में So देते हैं this is what इस श्लोक Bhagavan में फिर और teaches विस्तार in से this verse, and in the upcoming verses he will speak more about this. अधिवेशन यहीं पर So समाप्त we will करते हैं stop इसका कोई here for प्रश्न today. If you have any question, you can ask. दो प्रश्न है बाबू जी एक प्रश्न है पहले प्रश्न हमारा अच्छा कर्म हो बुरा कर्म हो हमारा Question, बोध का इच्छा है whether good karma or bad karma, इच्छा we है have the desire ऊपर to जाने do bhoga, to be the doer. भोग का इच्छा है तो आप जो भी कुछ करेंगे उसमें Answer, कर्म का बंधन if होगा you have desire for bhoga, whatever karma you do, it will lead to आप जो भी bondage. कर्म करें
whether it is prescribed or prohibited. होता ही In है prohibited, anyway, there is bondage. बंधन में है। But even if you do prescribed action with the desire for bhoga, it will lead to bondage. युधिष्ठिर महाराज इतना महान व्यक्ति है, Other question, देवता भी Yudhishthir Maharaj is such a great person, जब and it is युधिष्ठिर said in महाराज की बात Mahabharata करते हैं देवता भी that सुनना चाहते हैं। when Yudhishthir इतना Maharaj महान व्यक्ति है, speaks, उनके even अंदर भी भोग की devatas इच्छा है, want to hear. वो भी जानते हैं। So, such a वो great बात जानते हैं personality, he कि doesn't have desire for लेकिन bhoga. फिर भी यहाँ बोलने की मतलब ये अश्वत्थामा कुंजरा बोलने के लिए क्यों इतना संकोच करता है? Why was he hesitating so much ऐसा करते हैं मतलब in भगवान का सुनना चाहिए, speaking मतलब that शास्त्रों का lie? आचार्य को Is सुनना it to चाहिए, teach गुरु us को सुनना चाहिए। that we should be obedient to एग्जाम्पल है, बहुत से केसेस है, Guru, युधिष्ठिर महाराज इस elders? तरीके से बिहेव करता What है, is he trying फिर to भी अगर teach भोग की इच्छा नहीं by है his hesitation in speaking that तो lie? थोड़ा इसलिए सा तो झूठ बोलना नहीं चाहते ना। So, answer, वो कहते हैं कि why was राज्य he मिले या ना मिले, hesitating to speak that lie? He said that whether I get kingdom or no, I do not want to speak the lie. तो फिर भगवान क्यों कह रहे हैं उसको झूठ बोलने के लिए? So then the question is, why is Bhagavan telling him क्या to speak भगवान, that lie? क्या युधिष्ठिर जो है वो भगवान से ज्यादा जानते हैं? Is Yudhishthir more intelligent than हाँ, ये Bhagavan? अलग स्तर होते हैं। So these are different levels, जैसे एक standards. नीति होती है, Like there is एक Niti, धर्म होता है, एक there is अर्थशास्त्र होता है, Dharma, एक there is धर्मशास्त्र Artha होता है, एक Shastra, there मोक्ष is शास्त्र Dharma होता है। Shastra, there is Moksha Shastra. तो मोक्ष शास्त्र के अनुसार So according to Moksha जिस प्रकार Shastra, से कार्य करना है वही कर्म अगर आप धर्म के we अनुसार have to do करेंगे तो work फिर in a वो certain way, but same अर्थशास्त्र if you have to दूसरे do तरीके according से to है। Dharma, that is in another way. In Artha तो Shastra, it is in अधिकारी के another way. लेवल से So there are कर्मों different में भेद होंगे। levels of eligibility, and तो according to युधिष्ठिर that जो है difference, there is वो difference सोच in the रहे हैं action also. Yudhishthir कि is भगवान thinking उससे according to Dharma, and but इसलिए वो कहते Bhagavan हैं ना गहना is कर्मणि thinking गति। above that. भगवान That's कहते why हैं he कि जो says this लोग Gehna Karmanogati. Bhagavan says that these people who are standing before ऐसे you, धार्मिक नहीं है, they are not dharmic like you. और क्योंकि आपके जैसे लिए धार्मिक And नहीं है because they are not तो जब dharmic उनको like मौका you, मिलेगा when they will तो वो get the मारने के लिए opportunity to kill छोड़ेंगे you, नहीं आपको। they will वो नहीं not सोचेंगे कि spare you. युधिष्ठिर तो बहुत They धार्मिक will है, not think that, oh, Yudhishthir is very dharmic person, we should spare his life. No, they will kill युधिष्ठिर you दुर्योधन की तरफ से युद्ध कर रहे हैं, because they are fighting on the side of दुर्योधन Duryodhan, अधार्मिक व्यक्ति है। and Duryodhan is तो अगर आप adharmic, उसको सपोर्ट irreligious. करते हैं तो आप भी So if अधार्मिक you हो are जाएंगे। supporting Duryodhan, तो adharmic अधार्मिक person, व्यक्ति then you also अगर become आप adharmic उससे only. लड़ना चाहते हैं और नहीं मार सकते हैं तो आप हार जाएंगे। So if you have decided to kill अधार्मिक the व्यक्ति को नहीं irreligious मारना है adharmic person by dharma only, and if you cannot kill him, then you will be तो defeated. ऐसे में तो आप But हार your जाएंगे। goal is to make अधार्मिक dharma को आप victorious. धर्मांकी करा देंगे। But then you are making dharma lose in the war. इसलिए भगवान कहते हैं कि नहीं, That's आपको why धर्म Bhagavan की विजय says करानी है that we have उसके to लिए make ये dharma victorious, करना पड़ेगा। and in order to make dharma victorious, here you have to use adharma. भगवंती मायावी मायाविना मायावीषु मायावी। तो वो लोग मूर्ख हैं जो मायावी लोगों के साथ में मायावी की तरह व्यवहार नहीं करते हैं। So though it is said those people who are दूसरा आदमी fools अगर who झूठ do बोल not रहा है behave like a तो Mayavi उसको with another दूसरा बेवकूफ Mayavi. बना देगा। If some other person is speaking lie and you are very नहीं truthful, then मान he will सकते, fool you. So then नहीं becoming getting समझेंगे। fooled, that is also अगर adharma. मेरे I धार्मिक am व्यवहार से dharmika, अगर but दूसरा my अधार्मिक dharmic होता है behavior, तो मैं because उसको of that, if समर्थन करूंगा। somebody is doing adharma, then I am यही also श्रीमद् encouraging भागवत that गीता है, adharma. This is the गहना depth कर्मणो गति। in this मैं karma. अहिंसक हूँ, I am non-violent, आप हिंसक हैं, and suppose you आप are मुझे violent. मारने के लिए आ रहे हैं, मेरे You are परिवार को coming नष्ट करने के to लिए आ रहे kill हैं, me or my family, and I तो remain आपकी हिंसा non-violent. में So then सहयोगी बन गए। I am also becoming लेकिन अगर assistant मैं in your इस violence or हिंसा no? छोड़कर But if I give up my non-violence and I rather आपको मार सकता हूँ protest तो आप against मेरे को you, मार देंगे then I तो can उससे also आपको kill डर नहीं you. है ना कि मैं दूसरों को Maybe मार you may दूंगा। end up killing me, but there is possibility that I may kill तो you. So इसने at मारने least से बचाया ना। I protected my family, so I protected this much violence or तो no? ये कर्म की गहराई की बात है। So this is the महात्मा depth गांधी से in the एक प्रश्न understanding पूछा of गया था karma. Mahatma Gandhi was asked this question. He used to worship उनसे पूछा गया non-violence. So one कि press आप reporter इस asked him गांव में ठहरे हुए हैं, मान लीजिए that अगर कोई you are staying in कोई this आपके पास भी village. आ जाए Suppose some और uh, सबको मारना चाहता है terrorist comes तो here आप and he हिंसक हैं, wants तो आप क्या to करेंगे? kill तो these उन्होंने जवाब people. दिया What कि will you do? सबसे So पहले what तो मैं was उसके his सामने answer? जाऊंगा तो मेरे को His answer मारेगा, was, first of all, I will stand in front of him. First you kill me. So then he will kill. उससे उस पर क्या फर्क पड़ने वाला
how will it affect that person? तो ये है अहिंसा के माध्यम से हिंसा कराना। So this is encouraging violence through अहिंसा के नाम से non-violence. गांधी जी ने बहुत हिंसा कराई, In the name of non-violence, he ended वो up स्वयं अहिंसक थे। encouraging lot of violence, but he उनको himself ये remained non-violent. टाइटल मिल गया, तो उसकी He got हिंसा this करनी पड़ी। title. तो ये है इसकी बारीकी, सूक्ष्मता कर्म की। So this is the subtle aspect और जैसे of आपने बोला karma. कि त्रिनादपि सुनिचेन में हम So अलग अलग कर्म नहीं question, करते, we have adhikar also हमारे because जो भी लोग in स्थिति Trinadapi Sunichena we do not expect हम नहीं देख रहे हैं, respect हम वहाँ भी those आदेश तो कर रहे हैं, who निरादर कर रहे हैं, insult लेकिन us, यथार्थ but we do यथार्थ not स्थिति insult में them back. हम अलग लोगों को We देख are रहे हैं। taught to remain humble. नहीं, So are we not उसमें encouraging them? अधिकार भी मनुष्य उन्होंने आपका निरादर किया, Suppose the उससे answer, आपको suppose they insulted you. हिंसा होना So what is the loss अलग for you? अलग है। Violence and insult is not same thing. नेगेटिव है ना, They are not coming and killing जो you. उन्होंने आपने साथ They दिया may have उससे spoken some insulting words to you. क्या गया उससे। That's all. So what is the loss for you in मेरे that? हिसाब से यही लॉजिक में हम So गवर्नमेंट का question by this logic जैसे only. आप ही बोलते हो गवर्नमेंट का कानून हम फॉलो करना चाहिए, हम खुद नहीं मानना चाहिए, गवर्नमेंट का कानून को फॉलो करना चाहिए, अगर वो शास्त्र विरुद्ध भी हो कहीं पे भी हमको So it फॉलो is करना said that चाहिए। we should follow the गांधी law जी of ने government even if it गवर्नमेंट is को ब्रिटिश against क्या कहा, ब्रिटिश क्या कहते Shastra. हैं, गवर्नमेंट को फॉलो करना है But तो during time of ब्रिटिश Gandhi, को the फॉलो कीजिए, government मतलब इंडियन was कॉन्स्टिट्यूंसी of the Britishers, वहाँ भी so वही he could चल not रहा है। लेकिन गवर्नमेंट क्या कर oppose रही है it. ये तो देखना है ना, But गवर्नमेंट धार्मिक answer, है या what government is doing, you have to see that also. It is dharmic or adharmic. ये नियम जो कहा कि भाई गवर्नमेंट को फॉलो The करो, law which is the rule which is said that you have to follow the government, so you have to analyze, you have to स्टेटमेंट नहीं see. है, It is not just some blanket एब्सोल्यूट statement. स्टेटमेंट It's नहीं not है। an absolute statement that you have to do like this इसलिए यहाँ only. कहा ना कि गहना कर्म That's why it is said here, परिस्थिति पर विचार Gahana करना, Karmanogati. In every situation, you have to deliberate, ऐसा नहीं है कि अंधेपन से बस चलते जाए। not just blindly moving ahead. इसलिए मैं क्यों बार बार कह रहा हूँ Why भगवान am I always talking about का buddhi? उपयोग करना। Use buddhi. तो कुछ ऐसी स्थिति है कि गवर्नमेंट की बात मानने से मेरा कोई नुकसान नहीं है धर्म के स्तर पर, तो हमको उसको नहीं So तो in हमारी some things there is no loss in dharma in following government. नहीं हो Follow. सकता। Otherwise there will be difficulty in your life. You may have to go to jail. बाबा जी, परमानंद जी का प्रश्न है, हम इसका पता कैसे लगाएं कि हम Question: ठीक मार्गदर्शन how do we assess whether or not we are studying Shastra under proper guidance? मार्गदर्शन में ठीक मार्गदर्शन के मतलब आपका अध्यापक ठीक है तो ठीक मार्गदर्शन है, और अध्यापक ठीक नहीं है तो So what do you mean by मार्गदर्शन। under proper guidance? If teacher is right, then guidance is right. If teacher is wrong, guidance is wrong. आप कुछ अध्ययन कर रहे हैं स्कूल में तो If आपको you are उसको studying पढ़ाएं something in school, how do you understand you are studying correctly? विज्ञ है If जानकार your है, teacher is knowledgeable, तो expert, अध्ययन कर रहे हैं, और नहीं है तो नहीं then you are studying properly. Otherwise, no. सुजन सोफी जी का प्रश्न है, यदि भूतकाल में Next किसी ने question. मुझे हानि पहुंचाई What is the best thing to do if someone has harmed me in the past? Now, to become free, should I stop it कार्य करना बंद and करूं और not pull कार्य ना back? करूं? क्या हानि पहुंचाई है आपको, मेरे को तो पता नहीं है, हानि है As answer, I do not know what harm someone has caused to माफ you. कीजिए, If someone has caused some harm, you can forgive that आपका person मन शांत रहे। so that your mind becomes peaceful. मोहिनी जी का प्रश्न है, Next question. आपने बताया कि You हम कर्म explained that करके we धन have debts संग्रह towards करते the हैं parents और and उनकी one सेवा can करने get से become मुक्ति free by मिलती है, serving them. इन मुक्ति So what does it exactly mean to serve सेवा करने से क्या the तात्पर्य है? parents? सेवा करने का मतलब तात्पर्य क्या होता है, उनकी जिस चीज़ की आवश्यकता है उनको पूरा करना, What do you mean how to serve the parents? Whatever their needs are, you just उनको जो fulfill आवश्यकता their है needs. You पूरा provide करना। them what they need. Whatever help they need, you provide that help. और कुछ पुरुषोत्तम जी का प्रश्न है, यदि Next हम question. Even if one does karma as a kartavya, but the mind still runs in future and past during sadhana, how to stop it? मन तो भूत है स्वयं, So mind itself भूत को is कैसे रोकेंगे, a bhoot, like a ghost.
So that's why it is always running towards the past, the bhuta. नहीं, ये एक बड़ी समस्या है मन की। This is a major problem of the mind, and stopping this is not easy. तो उसके दो ही तरीके हैं, एक तो So इसको there are two ways only. में लगा के रखना, One is to keep it engaged in और दूसरा prescribed action, मंत्र and other is japa, chanting. ये नियंत्रण में आता है। That helps to control this mind. इसलिए भगवान भी Otherwise, mind is flickering only. Bhagavan himself says बहुत कठिन काम है मन का, it's very घोड़े की तरह it is very difficult to control this mind which keeps running like a horse. बलहीन हो जाएंगी, वृद्धावस्था All your senses will become बना रहता है, powerless in old age, but mind चला जाएगा, remains आँख से as powerful as it was earlier. नाक से भी ठीक गंध Your other senses, they may not function में properly. जाएगी, Hands, legs may become weak. You may not be able to hear properly. ठीक से खाना हजम You नहीं, may not have लेकिन proper digestion, but mind will always keep running like a horse सूक्ष्म शरीर। because it is subtle. ठीक है, प्रार्थना। We'll recite prayer verses. सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं हरि ओम तत्सत्।